Bank of India credit officer vacancy for scale 2, 3, and 4 is now out. You might be wondering what's next. Next is our dedicated batch, which covers complete syllabus of Bank of India credit officer from detailed live sessions to pre-recorded sessions. Along with that, you have dedicated MCQs, ready reckoner, practice set, test series, and even the interview guidance. For all this, you need to join the dedicated batch. Link is in description. Now enjoy the sample sessions of our content so that you stay ahead in this race. So the SARFAESI Act passed in 2002. It essentially empowers banks and other financial institutions to directly auction residential and commercial properties. When there is a secured loan, somebody has given his property to you, then there is no need to go to a court to enforce your interest on it, right? जैसा कि मान लीजिए आपसे कोई पैसा लेता है और वो अपना घड़ी गिरवी रख देता है और वो आप बार बार फोन करने पर आप वो आके अपना घड़ी नहीं लेकर जाता, आपका पैसा नहीं देता। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिंपल रिजोल्यूशन उस केस में है कि आप उसका घड़ी बेच देंगे या फिर खुद यूज करेंगे और बोलेंगे तू मत आ। तो ऐसे केस में पहले क्या होता था, हमें डीआरटी के पास जाना पड़ता था, एनसीएलटी के पास जाना पड़ता था, हमें कोर्ट के पास चक्कर काटने पड़ते थे, जबकि उसका मॉर्गेज प्लेज्ड किया हुआ सामान हमारे पास है। तो ये एक सिंपल लॉजिक है। सरफेसी से पहले हमें आईपी जो एनपीए है उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत होता था, और आपको हमेशा पता है कि कोर्ट के चक्कर काटना कितना मुश्किल है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। इन 1992 डीआरटी केम, आरडीडीबीएफआई एक्ट में आपका डीआरटी आया। उससे पहले नॉर्मल कोर्ट में सब रिजोल्यूशन होता था। इवन देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ केसेस इन डीआरटी, तो वहां पे भी मुश्किल है। तो इसीलिए बैंकर्स को जज, एग्जीक्यूटर, ठीक है, जज, जूरी एंड एग्जीक्यूटर सब बना दिया गया। ऑन द स्पॉट फैसला, मेरा पैसा आपने लिया है, वापस नहीं करेंगे तो आपका घर जो है मैं ले लूंगा। ठीक है, यही तो अच्छी बात है, होता है सिक्योर्ड लोन में। दिस इज द बेस्ट थिंग इन सिक्योर्ड लोन, यू कैन कॉन्फिस्केट इट। So to confiscate your own interest, to confiscate the thing that is pledged to you, that is mortgaged to you, why somebody should go to court? The one who is aggrieved, जिसको पैसा नहीं देना है, वो जाए कोर्ट में, हम क्यों जाए कोर्ट में? So that was the theme behind सरफेसी। इससे पहले बैंकर को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, और कोर्ट जाना हमेशा कंबरसम प्रोसेस है, बैंक हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग कैपिटल इज द मनी ए बिजनेस नीड्स टू रन इट्स डेली ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बोला था, आपका घर हो या फिर बिजनेस हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको क्या चाहिए? उसको रन करने के लिए डेली कुछ पैसे की जरूरत पड़ता है। जैसे आपको घर चलाने के लिए 10-20 हज़ार आपको चाहिए होता है, ग्रोसरी खरीदने के लिए, गैस भरवाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए। वैसे ये कंपनी को चलाने के लिए आपके स्टाफ्स को सैलरी देना होता है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्री ऑफिसर। इंडस्ट्री ऑफिसर क्विट कर सकते हैं, बाकी सबके लिए जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम में जा रहे हैं उनके लिए काम आएगा। ठीक है, तो घर चलाने के लिए बहुत जरूरी है एक डेली एक्सपेंस, कुछ पैसा आपके हाथ में होना जरूरी है। सिमिलरली कंपनी चलाने के लिए कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी हुआ, ठीक है, आप किसी से उधार लिए हैं तो उसका पैसा चुकता करेंगे, लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट मीन्स व्हाट यू ओ, मतलब एसेट मीन्स व्हाट यू ओ, व्हाट यू ओन, एंड लाइबिलिटीज व्हाट यू ओ। मतलब एसेट वो है जिसको आप, जिसका मालिक आप हैं। करेंट लाइबिलिटी, मालिक कोई और है, आपने उधारी लिया है, उसको वापस करना है। ठीक है, तो वो है करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल जो है घर चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए, फार्म चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, जो करेंट 1 महीने 2 महीने में जिस पैसे की जरूरत है आपको, वो है आपका वर्किंग कैपिटल। वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? आपके करेंट अकाउंट से लाएंगे, या फिर जो कैश आपके पास पड़ा होगा वो लाएंगे, तो करेंट एसेट से लाएंगे। करेंट एसेट में से कुछ पैसा जो है आपके ईएमआई पेमेंट में चला जाएगा, आप किसी से उधारी लिए हैं वो आके मांगेगा, वो चला जाएगा। कुछ लाइबिलिटीज आपके जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी चला जाएगा। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इज दी वर्किंग कैपिटल। सिंपल शब्दों में आपको बता दिया गया है। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं, एक जो ब्रेड्स बेचते हैं बेकरी, 50,000, बेकरी हैज 50,000 इन कैश, रॉ मटेरियल्स एंड कस्टमर ड्यूज, जो कस्टमर वापस कर देंगे
कोई तो कुछ कुछ लोग होते हैं तो वापस करते ही नहीं है, ऐसे बेईमान लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट दोज हु रिटर्न मनी इन टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो बेकरी सेज कि आई हैव 50,000 इन हैंड, बट ही हैज टू पे 20,000 टू द फ्लोर सप्लायर्स, टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, क्योंकि फ्लोर आएगा तो फिर बेकरी बनेगा ना, फिर ब्रेड बनेगा. ठीक है, पाव बनेगा तो फिर बिकेगा, राइट. सो दी वर्किंग कैपिटल इज 30,000, तो उनको अभी 30,000 की जरूरत है चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए. ठीक है, if the working capital is positive, then the business is healthy and can manage their daily needs. ठीक है, तो किस तरह से वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट किया जाएगा, जानना जरूरी है कि कितना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए. फंड्स needed for day to day expenses. It ensures smooth operations in a short term horizon. शॉर्ट टर्म में स्मूथ ऑपरेशन कैसे किया जाएगा बिजनेस का, उसके लिए बहुत जरूरी है. मतलब वो लिक्विड कैश की जरूरत है. कुछ कंपनियों के पास लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा आना बाकी होता है, बहुत पैसा उनको मिलने वाला है, बट वो सस्टेन करेंगे, जिएंगे, फिर तो कल देखा जाएगा ना भाई. ठीक है, जिंदगी अगर बची रही फिर दुनिया देखेंगे, राइट. अगर चला गया फिर कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे ही वर्किंग कैपिटल के नीड के वजह से अगर कंपनी का ऑपरेशन बंद हो जाए, जो शॉर्ट टर्म में जो एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर कंपनी चलेगा ही नहीं, तो वो लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग इसकी क्या जरूरत होगा. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कैश फ्लोज विद इन ए ईयर और एन ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जितनी पैसे की जरूरत है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे. मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको बिजनेस बनाना है. ठीक है, तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आप कुछ मशीन्स खरीदेंगे, या फिर जो मशीन्स हैं उसको रिपेयर करेंगे, या फिर कुछ मशीन आप भाड़े में लाएंगे, बनाएंगे सामान. ठीक है, फिर सामान बनाएंगे तो फिर उसको रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए होगा, स्टोर रूम चाहिए होगा. वो स्टोर रूम का मेंटेनेंस का फी अगर खुद का है तो ठीक है, मेंटेनेंस होगा. फिर किसी और का होगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा आपको. गेटिंग इट माई पॉइंट और नॉट, आर यू ऑल एंजॉइंग इट और नॉट? टेल मी, यू शुड एंजॉय द सेशन. एंड एक बार गुड स्टोर हुआ फिर उसको सेल करेंगे, सेल्स का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट. सेल होगा तो कस्टमर तो इमीडिएट पैसा नहीं देता है, 90 दिन 60 दिन के बाद पैसा आएगा. तो वो 60 दिन तक बिजनेस को कैसे चलाना है उसके लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ेगा उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे. ठीक है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज. व्हाट इज ए नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी? बैंक्स जनरली गिव लोन ऑफ टू टाइप्स. वन इज फंड बेस्ड क्रेडिट, लाइक यू गिव ए कार लोन टू somebody. What you give him? Immediately you disburse the money to the dealer's account, car dealer's account, or to the customer's account. Normally you give money to the dealer's account. What is sanction and what is disbursement? Have you heard about the term loan sanction, loan disbursement? Have you heard about the term loan sanction, loan disbursement? So what is the basic difference between them? Very good, Ankur. Sanction means paperwork cleared. Paperwork cleared, right? You cleared an exam, you saw it in the website, you passed, but as long as you don't have the mark sheet and certificate, it is complete useless. Useless or not? Useless or not? But that is sanction, that is not disbursement. When it will be disbursed? When the official offer document, appointment letter will be released to you. Got my point? Everybody clear now? Everybody clear now? So in a fund based credit, the disbursement takes place immediately. Fund based means immediate disbursement. Sanction is followed by disbursement. But in non-fund based, NFB, only sanction, no disbursement. No disbursement. Disbursement takes place as per the terms of the documentation if there is an agreement breach. So why banks go for non-fund based credit? In a non-fund based credit, there may not be any fund outlay. Yes, zero capital, fee based income, lesser risk. Why banks look forward for more? Yes, IUC Besne, it is visible. You ask me, I might have skipped it. You can ask me again. Banks earn an upfront commission even without giving them fund. Fund देने पर क्या होगा? If you give fund, sir, is this class for risk? Yes, it is useful for risk. IUC, it is useful for risk because it's a part of risk management too.
So NFB facilities such as bank guarantees and letter of credit play a crucial role enabling smooth trade payments and ensuring fulfillment of contractual obligation. In an international business, there is a trust deficit. Trust deficit. And what banks do? I will tell my dear friends, I will not give you teaching. You know me, you love Knowledgist. So deposit all your saving money in my account. Will you do that? So banking is a business of trust. Banking is a business of trust. But you only trust the banks, right? So that's why there is letter of credit, bank guarantee. If you say that banks only deal with money, so tell me someone got few letters from his or her first girlfriend, and he don't want to destroy it. He don't want to destroy it. He puts it in a locker, right? So it's a business of trust. Non-fund based credit, especially used in bank guarantee and letter of credit. Give a letter of credit from State Bank of India. When I send all the goods from California through a ship, and when it reaches your Bombay dock, that is called documentary credit. That is called letter of credit. That is called non-fund based facility. Your customer has not is not up to mark, and he has breached the contract of making a good road that will last for 5 years, but in 3 years that road has vanished. So please give me my money, my loss, my compensation worth 1 crore. The bank guarantee was of 1 crore. So what is that called? Crystallizing the bank guarantee or invoking the bank guarantee. Everybody got my point? Clear? So why non-fund based facilities? No immediate fund flow, and a commission income. Okay. You people give me 1 lakh rupees. You people give me 1 lakh rupees. I will give you 1,10,000 after 1 year. Is that profitable? Or you don't give me anything? You don't give me anything. Just after 1 year or upfront today, you just say Knowledgist is very good. I will give you 5,000 rupees now upfront. Which is a better deal for you? You give your 1 lakh to me. You give your 1 lakh to me today. After 1 year, I will return you 1,10,000. Okay. Else, you just say Knowledgist is good. Prabhanjan Tripathi sir is the best in the entire universe, and I am happy with your kind words. I will give you upfront 5,000 rupees. Which one is a better deal? Which one is a better deal? Second one, just say Prabhanjan sir is best. I'm happy giving you 5,000. Right? Non-fund based facilities is like that. No fund outflow. You give 1 lakh as a loan, you earn 10,000. Right? Different types of LC, including inland, foreign, site, usance, and revocable, irrevocable. The risk management people will tell me now, sir, then what is the risk in a non-fund based facility? Risk, guys, answer me. What kind of risk? If it is there, what kind of risk, and when risk comes to effect? Risk, very lesser risk. Very good. Very good. Very good. See, in the entire universe, there is nothing called no risk. So in entire banking, you don't work towards eliminating risk. Even if you stay in your home, the percentage of dying is similar to road accident. So in banking, you just work to mitigate risk. Very good. You just work to mitigate risk. So you cannot run out of risk. If in everything there is a risk, then why don't you take the risk of your own? You know, there is some kind of risk in letter of credit, but it is only when it is invoked. When the letter of credit is invoked, it is risky when crystallized. What is the term called invoking LCBG? Crystallization. Crystallization. When it is crystallized, then only you will face the risk. So it shows as your contingent liability. Contingent liability, right? Contingent liability.
when your customer defaults, when defaults, then only your letter of credit or bank guarantee will be invoked. So it is a secondary matter. So then only your saving point will be hit. May happen or may not happen. The assessment of LC focusing the factors like usance period, lead time, and the importance aligning purchase projection with financial data. So I will make a LC stating that the payment will be made by me after 90 days. So that is called the usance period. Bank guarantee highlighting three main times: performance, financial, and deferred payment guarantees. The significance of deferred payment guarantees in supporting buyers with installment payments. That is called deferred payment guarantee. Suppliers credit, buyers credit terms used for credit extended for imports overseas supply. फैक्टरिंग और फोरफिटिंग में क्या डिफरेंस है, हम दोनों लैंग्वेज में समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी में. चलिए शुरू करते हैं. फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग आर वन काइंड ऑफ credit terms or one kind of credit proposals where it is used by businesses to improve their cash flow. जो पैसा आपको किसी फ्यूचर डेट में मिलने वाला होता है, उसको इमीडिएटली किसी फाइनेंशियर को सेल करके आप जब इमीडिएट डिस्काउंटेड प्राइस में पैसा लेते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टरिंग या फिर फोरफिटिंग. और यहाँ पे एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल. हियर वी आर यूजिंग द टर्म कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स. इन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हेन यू सेल सम गुड, many people pay it upfront in cash, and some people tell you to pay it in credit or pay you in a future date. And in such conditions, either they sign a promissory note or sign a bill of exchange with you. That means they will pay you after a certain period of time, say 60 days or 90 days. अगर आप ऐसा नहीं करें तो बिजनेस चलेगा नहीं. अगर मीन्स बिजनेस में जो है क्रेडिट चलता है, तो ऐसे में जब क्रेडिट में आप बिजनेस करेंगे, यू नीड फॉर योर working capital, you need cash. So what will you do? You will sell it to the financier, your trade receivable, say the amount you are going to get in 90 days, you will be sell it to someone in a discounted price. Say you will get 100 rupees after 30 days. Now you will sell it to someone at rupees 95, and it will quench all your thirst for working capital. वर्किंग कैपिटल के सारे जरूरत को वो पूरा कर देगा. 95 आपके पास आ गया. उसके बाद जब कलेक्शन होगा, रेस्ट अमाउंट आपके पास आएगा और जो फाइनेंशियर है वो कुछ फी चार्ज करेगा. सिंपल एग्जांपल में देखते हैं इसको. चलिए, यहाँ पे तीन एंटिटीज हैं. मान लीजिए ये है राम, ये श्याम है और ये है फाइनेंशियर. राम के साथ आप क्या करते हैं, बिजनेस डील करते हैं. यू सेल सम गुड्स टू राम, राइट? एंड सॉरी, ही इज राम सेल्स सम गुड टू श्याम. ठीक है? एंड श्याम डोंट हैव इमीडिएट कैश टू पे टू राम. तो व्हाट ही डज, ही साइंस ए बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर किसी क्रेडिट बिल में वो साइन करता है और बोलता है कि आई विल पे यू आफ्टर 90 days. But Ram, who sold the goods immediately, needs some extra money to produce more goods to sell it to his future customers. ठीक है? राम को पैसा चाहिए इमीडिएटली, मगर श्याम जो है वो 90 दिन के बाद देगा. राम को फिर से प्रोडक्शन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो किसी फैक्टर के पास जाएगा, फोरफिटर के पास जाएगा, या फिर किसी फाइनेंशियर के पास जाएगा और बोलेगा आई हैव ए ट्रेड रिसीवेबल, मेरे पास एक बिल है जिसका पेमेंट मुझे 90 दिन के बाद मिलेगा. तो ऐसे में मैं क्या करूं? एंड हियर आइदर ही कुड बी ए फोरफिटर और ए फैक्टर. हम डिफरेंस देखेंगे आगे जाके. तो राम सेल्स द बिल टू ए फाइनेंशियर टू गेट इमीडिएट कैश. वो बिल देता है और इमीडिएट कैश लेता है. यूजुअली जब 100 रुपीज ड्यू होता है, यहाँ पे 80 रुपीज मिलता है फैक्टर के कंडीशन में, फोरफिटिंग के कंडीशन में 95 के आसपास उसको मिल जाएगा. ठीक है? फिर जब 90 दिन हो जाता है, when Syam is eligible to pay on his due date, the factor or the forfeiter, or in this condition the financier, will send the bill to Syam, tell him to pay, and Syam pay to him. ठीक है? तो चलिए, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको हम देखते हैं आसान शब्दों में. के सेशन में बहुत इजी शब्दों में रहेगा. नेचर ऑफ रिसीवेबल्स typically involves short-term domestic receivables arising from the sale of goods and services. अगर आप domestically within India you are selling some good to somebody, you can go for factoring. And in forfeiting, it is usually used in international trades for long-term receivables, long-term जो bill है. ठीक है? फैक्टरिंग में यूजुअली 90 दिन के आसपास होता है, 150 डेज भी मैक्सिमम है. फोरफिटिंग में यूजुअली टेक्स अप टू 5 years.
So factoring can be with or without recourse. Means in with recourse factoring the seller remains liable if the buyer defaults. ठीक है. And in without recourse the factor assumes the risk. Commonly it is used in domestic. So with recourse without recourse मतलब रिस्क टेकिंग होता है. विथ रिकोर्स मतलब अगर जो श्याम था वो हमारे एग्जाम्पल के कंडीशन में श्याम अगर 90 दिन के बाद पैसा पे नहीं करता तो उसके लिए लायबल कौन होता, क्योंकि उसने तो 95 राम ने तो ले लिया है फाइनेंसियर से. अगर विथ रिकोर्स है तो ये जो रिस्क है वो राम बियर करेगा. अगर विदाउट रिकोर्स है तब अगर श्याम पैसा नहीं देता है, इफ श्याम इज नॉट एबल टू पे द मनी ऑन ड्यू डेट, देन राम विल कलेक्ट इट. देन द फाइनेंशियर विल बियर द रिस्क. जो क्रेडिट रिस्क है यहाँ पे विथ रिकोर्स में क्रेडिट रिस्क सेलर का होता है. ठीक है. जो फैक्टरिंग और फिटिंग कराया है उसी का रिस्क है. पेमेंट नहीं आया तो वो अपने जेब से देगा. विदाउट रिकोर्स मतलब जो फाइनेंसियर है क्रेडिट रिस्क उसका है. 90 दिन के बाद पेमेंट नहीं मिलता है तब तब जो फाइनेंसियर है उसका नुकसान होता है. होप यू आर गेटिंग इट. एग्जाम्पल हम एक सॉम के साथ उसका एग्जाम्पल लेंगे. मान लीजिए आपने इनवॉइसेस है आपके पास 1 लाख का जिसमें आपको पैसा मिला नहीं है. फैक्टरिंग कंपनी फॉर हियर वी आर taking fast cash factors agrees to buy your invoices for 90% of its value immediately. तो आपको 1 लाख मिलने वाला था 3 महीने के बाद, अभी जो है आपको 90,000 मिल गया. एंड आफ्टर 60 days फास्ट कैश फैक्टर कलेक्ट द फुल अमाउंट फ्रॉम मेगा मार्ट. मेगा मार्ट हमने एग्जाम्पल लिया है. ठीक है. तो फास्ट कैश फैक्टर्स देन गिव्स द रिमेनिंग बैलेंस बाय डिडक्टिंग 2% फी. तो फैक्टरिंग में क्या होगा, वो एक फी चार्ज करेगा और आपको 98,000 पूरा मिल गया. ठीक है. इमीडिएटली मिला 90,000. जब पैसा कलेक्शन हो गया बाकी का 10,000 जब कलेक्शन हो चुका है, पूरा अमाउंट जब कलेक्शन हो गया उसमें जो फैक्टर है अपना एक फी रख के, जस्ट फी उसका चार्ज या फिर उसका इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो उसने आपको दे दिया 8,000 आपको दिया, अपना 2,000 जो चार्ज उसका था फी था उसको डिडक्शन किया. ठीक है. ये कंडीशन में. ठीक है. मान लीजिए सेम कंडीशन है 10 लाख का है या फिर 1 लाख का है, फॉरफिटिंग होता तो फॉरफिटिंग में क्या होगा, आपको इमीडिएटली 95% मिल गया और डिस्काउंट रेट जो है 5%. जब फाइनेंसियर या फिर फॉरफिटर जब उसको कलेक्शन करेगा श्याम से या फिर जो बायर है उससे कलेक्ट करेगा, वो कोई अमाउंट आपको वापस नहीं करेगा. इफ ही रिसीव्स दैट 50,000, से हियर 10 lakh was receivables, you got 9,50,000. 50,000 discount, when discounting is done you have not received the 50,000 and you are never going to get it. okay. इसमें फीस थोड़ा ज्यादा होता है, आपको इमीडिएट अपफ्रंट पैसा मिल जाता है. जब कलेक्शन होता है आपका कोई उसमें कोई मतलब नहीं है. when collection is made after 60 days or 90 days you are going to get nothing. That 50,000 or discounted amount is the fee for the forfeiter and it is, it is without recourse. तो इसमें क्या होता है, अगर आपको पैसा अगर वो कलेक्शन नहीं हो पाएगा तो जो फोरफिटर है उसका नुकसान होगा. बैंकिंग क्या होता है, पहले बैंकिंग समझते हैं. बैंकिंग है क्या चीज. अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. वी एक्सेप्ट मनी टू लेंड और टू डू इन्वेस्टमेंट. ठीक है. टू core functions of a bank, accepting deposit and lending the same amount of money. ये दो काम बैंक करता है. And when you generate profit, you give interest on deposit. So as a banker, it is your moral duty to generate profit. इसीलिए बैंकों में प्रेशर रहता है. You have to deliver profitability. It is your obligation because you have to honor your depositors, those who have FDs, RDs, savings accounts, current accounts with you. उनको ऑनर करना पड़ेगा, आपको सम्मान देना पड़ेगा आपको. ठीक है. या फिर उनके ट्रस्ट को बचा के रखना पड़ेगा. बैंकिंग इज नथिंग बट ए बिजनेस ऑफ ट्रस्ट. इफ नो ट्रस्ट देन नो बैंकिंग. So in order to maintain the trust, you cannot return a customer without giving him interest on his deposit. So for that reason, you have to lend money. You have to lend money with an interest rate. So
Then why credit management? Why credit management? First thing is profitability. Why I said profitability? Because you have to give interest. So banking is not for charity. Banking तो कम से कम charity नहीं है. गवर्नमेंट बैंक भी कोई काम फ्री में नहीं करता. तो गवर्नमेंट का बैंक है, लोगों को फ्री में चीजें देता होगा, कुछ फ्री में नहीं. जो फ्री में गवर्नमेंट बैंक्स बांटते हैं, पहला तो चीज है कि देयर इज नो गवर्नमेंट बैंक. All are public sector undertaking banks. These are public sector banks, not government bank. Okay, because in no bank government of India is having 100% stake apart from India Post Payment Bank. That is through post payment. Whenever government banks, public sector banks run social schemes, they earn agent commission from government of India. Government of India उनको agent commission देता है. आप लोगों को लगता होगा कि बैंक्स बहुत पुण्य का काम करते हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक तो ये सब नहीं करता. सीनियर सिटीजन्स को पेंशन बांटता है, ठीक है, दिन भर बैठ के मैनेजर पेंशन बांटता रहता है, टेलर जो है पेंशन बांटता रहता है. They earn a commission for paying pension, 75 rupees per pension. That is the agent commission they are getting. They are doing everything for profit, because even the public sector bank has to return money of the depositors with interest. So they have to bring interest to the bank. Okay. Then prosperity, vital for GDP, job creation, social welfare, गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंडा, ये सब कारण है. ठीक है, ये सब चीजें हैं. आप जब क्रेडिट में किसी को लोन देते हो, what they do, they enhance their business. When businesses are enhanced, there are so much of hue and cry about MSME funding कि MSME में लोन दिया जाए. क्यों? क्योंकि वो MSME इनफॉर्मल सेक्टर में लेंडिंग करता है. दे lend in informal sector. What is risk mitigation? Crucial for managing banking sector risk, directly linked to risk management. ठीक है, credit is a part of risk. रिस्क में क्रेडिट रिस्क इज ए मेजर थिंग. ठीक है, इफ यू इफेक्टिवली मैनेज क्रेडिट, देन यू ऑल्सो इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क, इनहेरेंट रिस्क इन बैंकिंग सिस्टम. देन यू हैव एनपीए रिजोल्यूशन. यू डोंट अलाउ लोन्स टू स्लिप टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आप नहीं चाहते कि आपका लोन आपके लिए पैसा इनकम ना करे. यू नीड इनकम फ्रॉम योर loans, so you don't want your loans to become idle, right? चलिए, इंपोर्टेंस ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिस्क मिटिगेशन, डेवलपमेंट एजेंडा एंड एनपीए मैनेजमेंट. Basic principles before lending to somebody, you have to keep these three things in mind. First, safety, then liquidity, then profitability. What is safety? Because money is safe in the hands of borrower or not, you have to find it out, because it is not your money. It is the public money, depositors' money you are giving to somebody. So you have to find out whether the money is safe in his hands or not. ठीक है? Whether the person taking the loan will return it or not, because it is not your money, right? Second, liquidity. If returned, हाँ, वो पैसा तो वापस करेगा, अपने मर्जी से वापस करेगा, अलग बात है. ठीक है, कोई पैसा वापस करेंगे, लेट हो जाए, लेट लतीफ. कुछ लोग स्कूल आते हैं, क्लास में आते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो डेली जाते हैं मगर डेली लेट भी हो जाते हैं. ठीक है, लोगों के ऊपर टीचर हर हमेशा चिढ़ता रहता है. अरे भाई, क्लास तो आया है ना, फिर आप चिढ़ते क्यों हो? अगर लेट आ जाएंगे, कोई जैसे अभी यूजर ज्वाइन किए हैं, बोले हैं कि सर आईफोन के नाम से, हेलो सर, सॉरी फॉर लेट, आई हैव नेटवर्क इशू. व्हाई ही और सी सेड सॉरी टू मी? वो तो क्लास में है ना. बट he joined late. When he joined late, he lost some point. इनिशियल जो मेजर पॉइंट्स हैं, उन्होंने उसको मिस कर लिया होगा, इसीलिए उन्होंने सॉरी बोला है. लेट कमर्स आर ऑलवेज आर स्कोल्डेड बाय द टीचर, बाय द फैकल्टी. व्हाई? बिकॉज अगर आना है टाइम पे आइए, नहीं तो मत आइए. नॉट टेलिंग टू यू, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. आपको नहीं बोल रहा हूं. ठीक है, डोंट कीप इट इन हार्ट. आप लेट भी ज्वाइन करेंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्डेड है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो. उसी तरह से लिक्विडिटी जब मैनेज करेंगे, लोन का पैसा तो वापस करेगा, वो करेगा, मगर 10 साल के बाद वापस करेगा. तो यू वांट ए वाटर ऑफ ग्लास, यू टेल योर चिल्ड्रेन, यू टेल योर वाइफ टू गिव यू ए वाटर ऑफ ग्लास. दे गिव इट नेक्स्ट डे, दे गिव इट आफ्टर 1 hour. What is the use in that? So similarly,
money has to be returned on the agreed date. What is the agreed date in a loan? Agreed date क्या होता है? लोन में आपको पैसा कौन से दिन वापस करना होता है? 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख या 25 तारीख, कौन से दिन आपको वापस करना हो? On the day of EMI, Zaniel. Yes, on the due date. If money is not coming on due date, then there is also issue, because liquidity mismatch will happen to the bank. So you should also ascertain whether he is going to pay me on due date or not. So in bigger cases, in bigger corporate cases, they look into the fund flow statement. Okay, sometimes in retail credit also they look on certain dates like 5th, 10th, 15th, 25th, etc., to find out whether the person will be eligible to pay back my dues on the EMI day or not. Otherwise it will of no use. Okay, न्यूज नहीं आएगा, इसीलिए बैंक्स हैवी पेनाल्टी लगाते हैं जब EMI बाउंस होता है. देन प्रॉफिटेबिलिटी, इफ दिस पर्सन इज repaying me on time, everything is okay, repayment is being done on time, but still I'm earning profit or not, because I cannot give loan below my cost of funds, RBI guidelines. किसी MD CEO को अपना बेटी आपके साथ मैरिज करवाना होगा, फिर भी वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर सकता. हाँ, मार्जिनल कम कर सकता है, ड्रास्टिकली कम नहीं कर सकता. रेपो रेट प्लस स्प्रेड जो होता है, कॉस्ट ऑफ फंड बैंक का है, नॉर्मली रेपो रेट होता है आज के डेट में, बिकॉज ऑल लोन्स आर नाउअडेज रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, RLLR. सो इवन इफ दे वांट टू मैरी देयर डॉटर टू यू, दे स्टिल कैंट रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट. In only one case the interest rate can be lower. बैंक अगर किसी को चाहकर भी लोन का इंटरेस्ट रेट अपने कॉस्ट ऑफ फंड से कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रॉफिट करना ही करना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया DRI, उसमें कर सकते हो, दैट इज 2.5%. उसमें भी मैक्सिमम लोन अमाउंट 20,000 का होता है. होम लोन 20,000, जनरल लोन 10,000 का होता है. पर डिस्ट्रेस्ड पीपुल, बहुत फाइनेंशियली बैकवर्ड लोगों के लिए वो है. These were just glimpses of our dedicated content for credit officers exam. When it comes to public sector bank credit officer exam, more than 95% selected students are always belong to Knowledgist. We are the only channel to release success sessions of various credit officers exam in BOI, PNB, Bank of Maharashtra, State Bank of India. So if you want to stay ahead in this race, अगर इस रेस में आप आगे रहना चाहते हैं और इसी ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए है नॉलेजिस्ट का डेडिकेटेड बैच, जिसका लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट में है. बाकी डाउट्स के लिए आप टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर. मिलते हैं हमारे इंटरनल लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में. तब तक के लिए आप नॉलेजिस्ट के यूट्यूब से पढ़ते रहिए और इस बार ही सिलेक्शन लेकर रहिए.